तो आज के इस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे कि ओहुको अल्कोहल मार्कर्स और भी बहुत कुछ। पर आज से 14 साल पहले मेरे पास बस यही कलर हुआ करता था, जो कि है डोम्स की तरफ से 12 सेट लॉन्ग वैक्स क्रेयॉन्स। Okay, it's complete. But it is 2024 और आज के इस टाइम पे मैं इस कलर से नहीं बल्कि इसके बड़े भाई इस कलर से कलर करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें 12 सेट्स है और जो कलर मुझे चाहिए वो इस कलर में नहीं है, इसीलिए मैं इस कलर को यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी इन्हें साइड में रख के मैं पेपर ले लूँगा। पेपर में A3 साइज़ का यूज़ कर रहा हूँ हमेशा की तरह। और वैसे मैं सास्के को बनाने वाला हूँ उसके सुसानो के साथ, और सास्के का जो फिगर होगा वो सिर्फ उसके कंधे से मुंह तक ही होगा, और बैकग्राउंड में मैं सुसानो को दिखाऊंगा ताकि मेरे ड्राइंग में अच्छे से लुक आए। मैं इसके दोनों हाथ को इसके मुंह में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा सा डरावना लगे। So after finish सास्के, अब बारी है सुसानो की। और बहुत देर से सुसानो को ड्रॉ करने के बाद मेरा ड्राइंग बिल्कुल रेडी है। Take me in the smoke, breathe in and let me go. Sing to your heart. Now time to outline. और आउटलाइन के लिए मैं हमेशा की तरह पेंटेन का आउटलाइनर और जेल पेन का यूज करूँगा। और इसके हाथ को मैं बहुत ही धीरे धीरे आउटलाइन कर रहा हूँ ताकि मतलब बिल्कुल भी बाहर ना निकल जाए, क्योंकि ये बिल्कुल इसके फेस के ऊपर है और अगर बाहर निकल गया तो पूरा फेस खराब हो जाएगा। तो मैंने पूरा सास्के को आउटलाइन कर लिया है और अभी सुसानो की बारी। क्योंकि सुसानो का कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, इसीलिए मुझे इसे भी बहुत धीरे धीरे आउटलाइन करना पड़ रहा है ताकि ये खराब ना हो जाए। Do you believe me that I'm a lonely soul? You love me. I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe? Okay, it's finally done. और आउटलाइन के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। Now it's finally time to coloring. So this is Tom's plastic crayons. और मैं आज इसी से कलर करने वाला हूँ, तो इसे क्विकली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसे खोलते हैं। इसे खोलने के साथ ही साथ मुझे मिला एक इरेजर
जो कि इस तरह का दिखता है, और इसमें है ऑब्वियसली इसमें केयॉन्स ही है और क्या होगा। तो इसका टोटल प्राइस मुझे पड़ा है लगभग 95 रुपीज़ एंड इसमें टोटल कलर है 28 एंड ऑल्सो इसमें है गोल्डन एंड सिल्वर कलर। नाउ स्टार्ट टू कलरिंग। तो पहले मैं इसके फेस के डार्क एरिया से कलर करना शुरू करूँगा और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ब्राउन कलर। अगर आप कभी भी क्रेयॉन से कलर कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको डार्क से लेके लाइट तक जाना होगा हमेशा। तो आज के लिए मैं इतना ही कलर कर रहा हूँ क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 4:02 और मुझे सोने जाना है। तो आज मैं सासके के ड्रेस से कलर करना शुरू करूँगा। तो मैंने सासके को पूरा कलर कर लिया है और अभी सुसाना को कलर करने के लिए मैं वायलेट कलर का यूज़ करूँगा। सुसाना को भी मैं सेम टेक्निक से कलर कर रहा हूँ, पहले डार्क कलर से और उसके बाद लाइट कलर से। और कुछ रियलिस्टिक डिटेल्स देने के बाद इट्स फाइनली डन। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट और आपको ये ड्राइंग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना।